In my last video lecture, I have explained you about the different methods for collecting primary data, and those were direct personal investigation, indirect oral investigation, information through correspondence, information through mailed questionnaire, and last was questionnaire through enumeration. And while discussing all this method, we have seen the various merits and demerits that comes under these methods. Okay, so today we shall discuss about sources of secondary data. So in most of the studies, the investigator finds it difficult to collect first-hand information on all related issues, and as such he makes use of the data collected by others. The sources of secondary data can be broadly classified under two heads, that is published sources and unpublished sources or secondary sources. Okay, so uh, s- sometimes what happens, in order to collect first-hand data, that is raw data, it becomes very difficult, and the investigator is unable to find the data. So what he does, he rely upon secondary data. Okay, and already you know what is secondary data. The data which are collected from secondary sources are known as secondary data. Okay, so what are the sources through which secondary data can be collected? There are mainly two sources. The first one is published sources, and the second is secondary sources, or also known as unpublished sources. Okay, so what now, let us see what is published sources. Published sources means ये सोर्स तुम्हारा क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर ईयरली तुम्हारा ये रिपोर्ट पब्लिश होता है, ठीक है। उस रिपोर्ट से हम वो डाटा ले सकते हैं। तो जब वो रिपोर्ट किसी तुम्हारा बुक पे पब्लिश हो रहा है, मतलब क्या है, वो बुक से हम डाटा ले रहे हैं, तो वो बुक हमारा सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पब्लिश सोर्स हो गया, और हम सेकेंडरी डाटा कहाँ से ले रहे हैं, किसी पब्लिश सोर्स से ले रहे हैं, ठीक है। सो पब्लिश सोर्सेज इंक्लूड गवर्नमेंट पब्लिकेशन। कभी क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का पब्लिकेशंस हो सकता है, बहुत सारे पब्लिकेशंस है, ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्री के बारे में कभी गवर्नमेंट सर्वे करता है कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा इंडस्ट्री मतलब प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, लॉस पे जा रहा है, तो वो सब सर्वे करता है। उसके बाद क्या होता है, एक रिपोर्ट पब्लिश होता है, ठीक है। उस रिपोर्ट से हम वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्विस होता है। इकोनॉमिक सर्विस का मतलब है कि जितने भी लोग, मीन्स हाउ the people residing in India, whether they are having enough standard of living, whether they are earning enough income, or whether they are getting employment or not, all this comes under economic service, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, लोगों को काम मिल रहा है या नहीं, वो सब के बारे में मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर वो डाटा कलेक्ट करने के बाद वो इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट होता है, उसमें पब्लिश करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह आरबीआई बुलेटिन्स होता है, उसमें तुम्हारा मनी सप्लाई अभी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट अंडर पब्लिश सोर्सेस, द नेक्स्ट वन इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। मतलब ये हाफ गवर्नमेंट होता है, हाफ प्राइवेट होता है, ठीक है। सेमी मतलब दोनों का आधा आधा। सो दिस इंक्लूड्स म्युनिसिपल कमिटीज एंड पंचायत्स। दे आर they are ruled by both state government and central government, means both are half half. Next is international publication. That means the reports which are published by internationally. Okay, it may be your HDI report, that is Human Development Index report, which is published by UNDP, that is United Nations Development Program, or
it may be the report of IMF, or it may be the report of WHO. Okay, these reports are known as international publications. So the next the next source of secondary data is unpublished sources or secondary sources. ठीक है? So unpublished sources of secondary data are information recorded in private offices, research institution, scholars, etc. can be important source of secondary data. ठीक है, ये ना अनपब्लिश सोर्सेज क्या है, ना वो किसी आर्टिकल पे पब्लिश होता है, ना ही किसी रिपोर्ट निकलता है मंथली वाइज या ईयरली वाइज या क्वार्टरली वाइज। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, अभी कोई रिसर्चर है, वो किसी सपोज इन ए पर्टिकुलर अर्बन एरिया या रूरल एरिया पे हाउ हाउ मच हाउ मेनी चाइल्ड आर स्टार्टिंग अप अप टू द एज ऑफ 20, तो 20 एज के अंदर पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसको अगर कोई मतलब किसी रिसर्चर है, सपोज मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे वो जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके मैं एक डाटा कलेक्ट करके मैं खुद का रिपोर्ट बनाऊंगा। ना तो वो सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए होगा, वो मैं किसी मतलब आर्टिकल पे पब्लिश नहीं करूँगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, अगर गवर्न अब अभी कोई दूसरा व्यक्ति सेम डाटा को कलेक्ट करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो मुझे अप्रोच करेगा और बोलेगा कि वो डाटा प्लीज़ मुझे मतलब सेंड कर दो ताकि मेरा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये है तुम्हारा अनपब्लिश सोर्सेज, जहाँ पर मतलब किसी भी आर्टिकल या रिपोर्ट उसका पब्लिश नहीं होता है। नो रिपोर्ट्स एंड article get published in unpublished sources. So these are the two main sources of secondary data, that is published sources and secondary sources or unpublished sources. So the next point that we are going to discuss is precautions in the use of secondary data। मतलब सा प्रिकॉशन का मतलब है सावधान होना। ठीक है, while using the secondary data we need to take some प्रिकॉशंस या फिर केयर लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंडरी डाटा को किसी पब्लिश सोर्स से या अनपब्लिश सोर्स से ला के यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंस सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन obtained, it is highly desirable that a proper scrutiny of such data is made before they are used by the investigator। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हें पता है कि इन्वेस्टिगेटर का मीनिंग क्या है और कौन इन्वेस्टिगेटर होता है। सो जब भी हम सेकेंडरी डाटा लेते हैं किसी भी मतलब दोनों आइदर पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेस, देन वी नीड टू क्रॉस चेक प्रॉपरली। मतलब दैट मीन्स वी नीड टू चेक properly so that no mistakes are included in that particular इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, मतलब कोई भी गलतियां ना हो वो इन्वेस्टिगेशन पे, इसीलिए हमें प्रॉपर स्क्रूटिनी मतलब चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रिकॉशन सब क्या है, बिफोर यूजिंग सच डाटा द इन्वेस्टिगेटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, वो तीन एस्पेक्ट्स को लेना पड़ेगा। फर्स्ट है तुम्हारा वेदर द डाटा आर सुइटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन व्यू। मतलब जो सेकेंडरी सोर्स से हम डाटा लिए हैं, अभी वो डाटा मेरा काम का है या नहीं, वो पहले हमें वो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम वो डाटा को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा वेदर द डाटा आर एडिक्विट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो जो डाटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है, वो कितना एक्यूरेट है, मतलब कितना एक्यूरेसी, कितना सही है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर वो डाटा कलेक्टेड है पर वो डाटा मतलब थोड़ा मतलब 100% का ओनली 20% सही है, बाकी 80% रॉन्ग है, तो वो डाटा लेके हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, बाद में हमारा कंक्लूजन ही रॉन्ग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा वेदर डाटा आर रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या है कि रिलायबल मीन्स वेदर वी कैन यूज़ द डाटा और नॉट। ओके, मतलब हम लोग वो डाटा को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, रिलायबल का मीनिंग।
So to know whether it is reliable or not, we need to find out which method of data collection was used. मतलब whether the data can be used for further treatment, we need to see which method of primary data collection was used. Okay, there are five methods, so which method was used? So we have seen in various method various demerits were there. So which method was used, we need to find out that first. मतलब हमें उन प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते वक्त हम पांच मेथड यूज करते हैं, उन पांच मेथड से कौन सा मेथड यूज किया गया है उस मेथड को पहले ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वो डाटा मतलब कितना सही है, कितना हद तक वो सही रहेगा, वो पता लगेगा। ठीक है, तो these three are the precaution that we need to use while using secondary data. So next topic we are going to discuss is method of collecting data. ठीक है, method of collecting data, don't confuse it with primary data. Okay, it is talking about only methods of collecting data, how data can be collected, not primary data. This must be clear. Okay, so when secondary data are not available for the problem under study, a decision may be taken to correct primary data by using any of the methods discussed in the previous chapter. Since here what since if data is not available, so we can use the various five methods that we have got already we have already discussed in my in our previous video lecture. There were five methods. Okay, by using those five methods we can collect data. So the required information may be obtained by following either the census method or the sample method. So to in order if while collecting secondary data some data may be missing, so those data can be collected either by using census method, which is also known as population method or method of complete enumeration, or sample method. Okay, there are two methods, you need to remember this. So first we are going to discuss that is census method or population method. So in census method, each and every unit of population under is investigation or studied is called census method or method of complete enumeration. So this means what? Let us take an example. Suppose I want to find the weight of all the students of class 11 of commerce stream. Okay, so now the total number of students will be the populations. Okay, total number of students in class 11 of commerce stream is the populations. So I will and I will collect data from each and every student. I will ask each student what is your weight, what is your weight. Okay, so this in census method, each and every unit of population under investigation or study. That means uh, suppose already I have told I am collecting data of weight of class 11 students of commerce stream. Okay, so of commerce stream class 11 student I will ask each and every one what is their weight. So this is census method or population method. Okay, so population is also known as a universe. Population is also known as universe. Okay, so a population or universe may be finite or infinite. Finite when items under study are fixed. Suppose I am studying only about class 11. That means that is fixed amount. In class 11, there are only 78 students. That is 78 is the fixed number. There is no more. But if suppose I am going to study the weight of all the students of Bokajan. Now this is an infinite because in the, practically it is
practically it is very difficult to collect all the students weight of Bokajan from class nursery to up to graduate level. Okay, so this will either universe will be finite or infinite. This depends upon whether the unit are fixed or unfixed. Okay, or it is unlimited. So there are various merits and demerits of census method. The first merit is data are obtained from each and every unit of the population. The first merit. That means there is great chance of accuracy. क्यों accuracy का बहुत ज़्यादा chances है? क्योंकि मैं एक एक करके पूछने वाला हूँ, ठीक है? सो मुझे एक एक का जवाब मिलने वाला है, तो वो क्या है कि accuracy होने का chances ज़्यादा है. Next merit है the result obtained are likely to be more accurate and reliable. Already I have told कि result accurate होने का chances ज़्यादा है और वो मतलब ज़्यादा reliable है. ठीक है, हम ले सकते हैं उस डाटा को क्योंकि मैं खुद एक एक करके पूछा हूँ. So the demerits are census method is very much expensive. क्या है, census method बहुत ही expensive है. Expensive क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे हमें इनमोरेटर्स को पहले नियुक्ति देना पड़ेगा. मतलब क्या है कि उसको जॉब देना पड़ेगा. फिर वो क्या करेगा, बहुत सारे लोग होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे पैसा देना पड़ेगा उन लोगों को, सबको सैलरी देना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है कि ये तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग सकता है. ठीक है, सेंसस मेथड इज़ नॉट मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि अगर तुम्हारा पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, वो एक एक को पूछते पूछते बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. और नेक्स्ट है तुम्हारा सेंसस मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल द टाइम. दैट मीन्स in every case we cannot use census method. Okay, this is one of the biggest demerits of census method. Suppose uh, in class 11 student there are only 10 students, so 10 student or 5 students, so we cannot use the census method since there are only 5 students. Okay, so these are the merits and demerits of the census method. And next is sampling method. Okay, what is this method? In this method only a part of the universe instead of every unit of the universe is studied. So what does it mean? Sampling method. In sampling method what do we do? In I have given one example, that is I want to collect the weight, uh, I want to collect the data of weight of the students of class 11 of commerce stream. But in sampling method, in census method, what I have done, I have asked each and everyone what is what is their weight. But in sampling method, what I will do, I will suppose I will take randomly. Suppose I have chosen roll number 1, roll number 5, roll number 10, roll number 15. So I have left three students. So I will ask them randomly and I will write them. So I will estimate that according according to the randomly I will make one statement that the weight of the student is 50 kg averagely. Okay, so I what did I done in this method? मैंने यहाँ पर सब स्टूडेंट को एक एक करके नहीं पूछा है. ठीक है, यहाँ पर मैंने रैंडमली मतलब तीन चार स्टूडेंट को छोड़ के फिर नेक्स्ट और चार स्टूडेंट को छोड़ के नेक्स्ट को पूछा है. तो यह है सैम्पलिंग मेथड. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंपल मतलब क्या होता है, कभी कभी तुमने सुना होगा कि तुम ब्लड टेस्ट करने जाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा ब्लड सैंपल लेते हैं, तुम्हारा पूरा सारा खून वो ले नहीं लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा खून लेके वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. ठीक उसी तरह सैम्पलिंग मेथड पे भी सेम उसी तरह होता है. ठीक है, और इसका मेरिट्स और डेमेरिट्स क्या है? पहला मेरिट्स है दिस मेथड सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि हम लोग
रैंडमली पूछ रहे हैं कि सबको नहीं पूछ रहे हैं, चार स्टूडेंट को छोड़ छोड़ के पूछ रहे हैं, मतलब एक को पूछा फिर चार को छोड़ा, फिर एक को पूछा फिर चार को छोड़ा, ऐसे करके मतलब हम लोग रैंडमली बहुत कम स्टूडेंट को पूछ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो ये कम समय लगेगा और क्या होगा, एक आदमी ही बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। एंड द नेक्स्ट मेरिट इज दिस मेथड इज मोर suitable बिकॉज लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड। बहुत लार्ज मतलब बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो रैंडमली ले रहा है, सब स्टूडेंट को नहीं पूछ रहा है, तो वो बहुत सारा स्टूडेंट को एक ही दिन में वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। एंड द थर्ड मेरिट इज इन दिस मेथड रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन मोर क्विकली, मतलब ये ज़्यादा फास्ट, बहुत स्पीडली हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर सेंसस मेथड पे ये पॉसिबल नहीं था कि इन सेंसस मेथड वी नीड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, बट in sampling method what we are doing, we are only collecting data from some part of the population. So the demerits of this sampling method are high degree of accuracy is not possible। accuracy possible नहीं है क्योंकि why accuracy is not possible, because we are studying only a part of the population, not all unit of the population. Okay, so there may be some mistakes. Suppose I have asked one student what is your weight. His weight was 40 kg. So I have assumed that the next four students are also 40 kg. Then I have asked the fifth student what is your weight. He told me that my weight is uh, 60 kg. So in this way data may be that the data we are collecting that may be become wrong. Okay, so the next demerit is if the universe is small then sampling method cannot be used. So in the same way, if if the population is very much small, suppose 10 student, 5 student, what is the use of using sampling method, since we are studying only a part of the universe. So we need not have to use sampling method. And the third demerit is highly trained person are required to perform this method. Since we are going to study only a part of the universe, so highly trained persons should be there in order to collect the data. Because if he is not trained, then he cannot take those assumptions. वो खुद से मतलब assume नहीं कर पाएगा। ठीक है, so this these are the topics today we have discussed, that is sources of secondary data, and then precautions in the use of secondary data, then methods of collecting data, that is census method and sampling method. Okay, in my next class I will end this chapter by discussing the last topic, that is various methods of sampling. Okay, so thank you.